Okay. So since we are computing this probability in logistic regression, we refer to logistic regression as a discriminative classifier. Okay. So I'm using a word classifier here, but we're calling it logistic regression. So at times we see students are misleading. उनसे हम पूछते हैं कि इंटरव्यू के दौरान कि logistic regression किस लिए यूज होती है, right? And they say कि regression के लिए, but instead, in fact, it is used for classification. Why do we refer to this as regression? क्योंकि जब mathematical operations जो हम कर रहे हैं ये probability compute करने के लिए that are very similar to regression, followed by a last step in which we convert the regression output into probability. अभी हम इसकी बात करते हैं mathematically हम क्या करते हैं. Logistic regression classifier is also a building block of neural networks जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. In fact, logistic regression is the simplest neural network you can have, right? In which okay, what do we do in logistic regression? Model क्या होता है mathematically? कुछ भी नहीं है. So let me start with text. You weighted sum of inputs plus you add a bias, right? This will give you a real number, right? And convert weighted sum into probability. Right? So हमारे पास input जो है वो x है that belongs to RD, or let me stick to the notation which we have used in the lecture slides. So I take a vector theta. Maybe I define new vector. Let's say x. मैं x को modify कर देता हूँ. I update x in a way that x is में x पड़ा हुआ है, and I simply add 1 to x. मैं सिर्फ append के पीछे की तरफ एक 1 ऐड कर देता हूँ. ठीक है. And now this x belongs to RD plus 1. And I also define a vector theta. इसमें we have theta 0, theta 1, so on and so forth, theta d. It means theta belongs to also RD plus 1. So theta transpose x क्या होगा? This modified x would be theta 0 plus theta 1 x1 plus theta 2 x2. So these round brackets indicates कि ये first component x का, second component x का, and so on and so forth. Right? Plus dot 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 plus theta d, a weighted sum of input features plus theta 0 is the bias term. यहाँ पहले करते हैं regression में, nothing new. So this would be a real number, right? So पहला step हो गया. Now we convert this weighted sum into probability. Okay, question. ये scalar का vector होगा? Scalar होगा, right? And usually we use small z to denote this, right? And we will use the same notation when we study neural networks. ठीक है? इसे हम कहते हैं कि weighted sum में inputs का एक z है. Weighted sum plus bias. Weighted sum plus bias. Z आ गया. So now we need a function जिसकी input 0 जो कि real number है, it's a weighted sum, right? And output should be a real number, right?
but we require this output should be between probability, इसको probability होना चाहिए between 0 and 1. We will study different types of functions. इनको हम नाम देते हैं एक्टिवेशन फंक्शन का, ठीक है. The reason we call it, we refer to these functions as activation function will be evident in a couple of lectures. ये concept यूज हो रहे हैं न्यूरॉन से. हम न्यूरॉन जब पढ़ेंगे कि न्यूरॉन जब एक्टिव होगा तो वो आगे सिग्नल पास करेगा, अगर एक्टिव नहीं होगा सिग्नल आगे पास नहीं करेगा, ठीक है. एक्टिवेशन फंक्शन मीन्स के वो एक वेटेड सम को, जो कि रियल नंबर है, जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो सकता है, उसको स्क्विश कर रहा है between 0 and 1, right? And in logistic regression, this activation function is a sigmoid function. इसको मैं थोड़ी एज कह देता हूँ क्योंकि हाइपोथेसिस है. Sigmoid function. Mathematically, sigmoid function is of this form: 1 over 1 plus exponent of minus z. Let's see how does it look like. So if this is z and this is h of z, and if I plot this, see when you take z is equal to 0, what happens? 0.5, right? जब z नेगेटिव होगा तो एक्सपोनेंट ऑफ माइनस z बड़ा हो जाएगा, right? And it like this, it goes like this. And when z becomes positive, it becomes like this. So since it's a S-type shape, it's called, we refer to as sigmoid. So it never goes, always stay up. जीरो पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे 1 पे जाएगा, प्लस इन्फिनिटी के ऊपर. So we have a function that takes input from minus infinity to infinity and squishes that input between 0 and 1. And this activation function, this nonlinear function, is used to map a weighted sum into probability. Okay, probability में आ जाता है आपके पास, ठीक है. अगर मैं सारे को सम करूं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ मॉडल जो कुछ इस तरह का है. इनपुट x है, आउटपुट hypothesis function h of x है. And what's h of x is simply 1 over 1 plus sigmoid, और sigmoid के यहाँ पे z आ रहा था, which is weighted sum theta transpose x. और चूंकि आपका जो आउटपुट है वो डिपेंड करिए थीटा के ऊपर, तो हम सबस्क्रिप्ट लगा दें थीटा, एट थीटा. क्वेश्चन? ये उसको मैंने उसकी डिपेंडेंस थीटा पे करने के लिए, शो इंडिकेट करने के लिए आई हैव एडेड सबस्क्रिप्ट थीटा. उसका फंक्शन नहीं है इफेक्टिवली. ओके, इफ वी डूइंग बाइनरी क्लासिफिकेशन, हम कहते हैं कि h of theta of x की वैल्यू दिस कैन बी between 0 and 1, right? Closed है. So if it is greater than or equal to 0.5, हम कहते हैं वो एक क्लास है, and other class is when h theta of x is less than 0. ठीक है. This is a simple model of logistic regression. ठीक है. जो hypothesis function है वो डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, ठीक है. It means we need to learn this theta from the data. ठीक है. Okay, before we talk about learning of this theta, हम देखते हैं कि ये थीटा चेंज करने से होगा क्या.
कि और क्लासिफिकेशन के अंदर डिसीजन बाउंड्री का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ब्रीफली डिस्कस्ड इन KNN डिसीजन बाउंड्री। देखते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर डिसीजन बाउंड्री किस तरह की होती है, ठीक है। अगर मैं इसको इसी को ट्रांसलेट कर लूँ, एट थीटा ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0.5 का मतलब ये है कि सिग्मॉइड की आउटपुट है वो 0.5 से बड़ी है। डज इट मीन कि थीटा ट्रांसपोज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड थीटा ट्रांसपोज एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0? Okay, I would like to shed some light on this theta transpose x greater than equal to 0. x किस स्पेस के अंदर है? RD + 1 में, थीटा भी RD + 1 में, ठीक है। So let's say for better understanding we take d is equal to 2 और हम कहते हैं कि हमारे पास डेटा कुछ इस तरह का है। पहला फीचर, दूसरा फीचर, ठीक है। एंड से we have say red points, then we have these blue points, ठीक है। अगर आपसे पूछूं कि फॉर अ गिवन थीटा, चलिए हम पॉइंट्स बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले हम कहते हैं कि x1 x2, so theta transpose x is equal to 0 would be my decision boundary if I get a point that lies for which theta transpose x is greater than equal to 0, मैं कहूँ क्लास 1 के अंदर है, if theta transpose x is less than 0 I would say कि वो क्लास 0 के अंदर है, ठीक है। So this is an equation of a line, देखिए है क्या ये, theta 0 plus theta 1 x1 plus theta 2 x2 is equal to 0, right? ये ऐसा नहीं है कि एक ax1 plus bx2 is equal to c plus c is equal to 0. This represents an equation of a line. So इसमें थीटा 1 और थीटा 2 जो हैं, so वो बताते हैं कि इस लाइन का नॉर्मल क्या है, right? So if you have a line like line like this, इस लाइन की कोई इक्वेशन होगी, राइट। लेकिन मैं अगर से पूछूं कि इस लाइन की इक्वेशन अगर ये दी हुई है तो थीटा नॉट क्या है, थीटा 1 क्या है, थीटा 2 क्या है, तो यू वुड से तो नॉर्मल होगा, दैट वुड बी थीटा 1 x1 से और थीटा 2. So a vector from the origin would be normal to this line, perpendicular line, ठीक है। और थीटा नॉट क्या है, थीटा नॉट बता रहा है कि इस लाइन का फासला कितना है ओरिजिन के साथ, ठीक है। so all of these lines, थीटा 1 थीटा 2 सेम होंगे ना, ठीक है। थीटा नॉट बता रहा है कि इस लाइन का कितना डिस्टेंस है origin से, ठीक है। Okay, so whenever you see something like this, theta transpose x is equal to 0, this represents a line in 2D, right? A line in 2D, a plane in 3D, and when you move further increase D, so we call it, so this is an equation of hyperplane. We call it hyperplane because it divides the space into two half spaces, right?
So one half space is theta transpose x is greater than equal to 0. Another is theta transpose x less than equal to 0. So this hyperplane divides the space into two half spaces. Okay. So in logistic regression, the boundary, when you learn theta, this boundary would represent a plane, a line, और इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई कर्व नहीं है. ठीक है. हम कहते हैं कि बाउंड्री जो है वो लीनियर है. वी हैव अ लीनियर डिसीजन बाउंड्री इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन. So we have a linear decision boundary. Sorry. My apologies. Okay. So theta transpose x is equal to 0 is a hyperplane that separates your feature space into two halves, theta transpose x greater than equal to 0 and theta transpose x less than equal to 0. So we learn this theta that characterizes, that parameterizes our decision boundary from the data. हम जब लर्न कर लेते हैं, assume हम थीटा लर्न कर लिया, we will see shortly कि हम लर्न कैसे करते हैं उसको. But once we know theta, for any given test point, we simply project that test point to theta. अगर वो inner product नॉन नेगेटिव है जैसे क्लास 1 है, अगर नेगेटिव है तो क्लास 0 है. दैट्स इट. ठीक है. हाँ, आप कहेंगे सिग्मॉइड कहाँ गया, राइट? सिग्मॉइड की बात करते हैं. वी यूज सिग्मॉइड फॉर लर्निंग, राइट? जी हमने ब्लू लाइन लर्न करनी है, लेकिन जो ब्लू लाइन पैरामीटर हो रही है 3 चीजों से हो रही है. थीटा 1, थीटा 2, थीटा नॉट. थीटा नॉट क्वांटिफाइज, थीटा 1, थीटा 2 क्वांटिफाइज के और उसकी लाइन की ओरिएंटेशन क्या, लाइन की ओरिएंटेशन क्या है, वो लाइन इस तरह है कि इस तरह उसकी ओरिएंटेशन क्या है, राइट? एंड थीटा नॉट अलोंग विद थीटा 1, थीटा 2 क्वांटिफाइज के उसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन के साथ. ठीक है. So we can have a cascade of logistic regression classifiers to have non-linear boundaries. वो हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे ना परसेप्ट्रॉन को और न्यूरल नेटवर्क्स को, तो वहाँ पे हम देंगे कि हमारे पास XOR फंक्शन होता है, तो उसके लिए वी नीड 2 हाइपरप्लेन्स, और वहाँ उसको हम कैसे हैंडल करते हैं. बट यू विल हैव टू कैस्केड. फिट कर रहे हैं. और जब उसको हम वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी देयर, क्योंकि हर लेयर पे जो सिग्मॉइड है वो एक नॉन लिनियरिटी ऐड कर रहा होगा, राइट? सो इट्स नो लॉन्गर लीनियर. सो यू गेट effect, you can have different boundaries and you can also have non-linear boundaries. Okay. For now, logistic regression you can have in its basic form, logistic regression has a linear boundary, which is theta transpose x. You cannot have a non-linear boundary with logistic regression in this form, but we can modify this. हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो how can we have non-linear boundary in logistic regression. फिर हम पहले उसकी बात कर लेते हैं. Okay, to understand this, we first understand कि जो linear boundary है वो आ क्यों रही है. Why do we have linear boundary? What is the origin of linear boundary? Linear combination है, where we have weighted sum of inputs plus bias. अगर हम इस linear combination को non-linear कर दें, we can have a non-linear boundary. Right? It could be polynomial or it could be any non-linear function, right? So idea is this. So you have, अभी हम क्या कर रहे हैं? So we're doing a linear operation here, right? Followed by sigmoid, and what you get is, right, और theta यहाँ पे.
ये सिर्फ स्क्विशिंग कर रहा है, जस्ट आर टू आर मैपिंग है, ठीक है, जो कि सिर्फ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को 0 1 के अंदर स्क्विश कर रहा है, ठीक है. Okay, again, imagine if I need a non-linear boundaries, right? It means I can change this box, this system, or this mapping. Okay. In fact, to be more clear, I can keep it linear. I can keep it sigmoid. यहाँ पे z आ गया, यहाँ पे अभी हम रखते हैं कि थीटा ही है, but यहाँ पे we can add, here we can add input x something intermediate, I can call it w, right? So this is on a non-linear block or a non-linear system. So I would encourage you, और मैं चाहूँगा कि किसी भी एल्गोरिदम की जो सिस्टम लेवल इंटरप्रिटेशन है ना, वो आप करना सीखें कि व्हाट्स हैपनिंग एट द सिस्टम लेवल इन ईच एल्गोरिदम, ठीक है. कि आपने पहले क्या किया, आपने वेटेड सम लिया, दैट इज वन ऑपरेशन, उसको वन ऑपरेशन कह लें, उसका एक सिस्टम कह लें, उसको आप एक सब ब्लॉक कह लें, राइट. सो यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि आप इस ब्लॉक को चेंज करें तो क्या होगा, राइट, कि यहाँ पे इसकी इनपुट क्या आ रही है. एंड इवन यूर प्रोग्रामिंग, तो आई इनकरेज यू कि आप जो फंक्शन या ब्लॉक्स हैं इनको आप सेपरेटली प्रोग्राम करें और सेपरेट टेस्ट भी करें कि जो उनकी डिजायर्ड आउटपुट है वो आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप ये वेटेड सम कर रहे हैं, तो यू नो कि आपने उसको दो वेक्टर्स देने हैं, थीटा एंड एक्स, एंड इट गिव्स यू इनर प्रोडक्ट ऑफ दोस टू. अब यू कैन टेस्ट कि आप दो इनपुट नोन दें और देखें वो डिजायर्ड आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है. सो इट हेल्प्स इन when you implement algorithms. It also helps understanding the structure of your algorithm, कि आपके algorithm में कहाँ पे non linearity है, आपके oh ये block तो linear है, I don't need to change this, let's add another block that can introduce non linearity in it, ठीक है. So you can have better understanding of the overall algorithm, overall machine learning system, या कोई भी system develop कर रहे हैं आप, it could be a control system or it could be any system, ठीक है. तो सिस्टम लेवल डायग्राम है ना, इसको just try to understand this. And in fact the ability to have to analyze any algorithm at a system level is a strength of electrical engineers. हम जब when you can view system level, so you can apply these concepts to any other discipline, right? For example, we work in urban development these days. हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं urban. So we're just employing the same concepts what are applicable in one domain, you can apply to other domain. आप सर्किट के कॉन्सेप्ट जो है वो आप मैकेनिकल डैम्पर पे लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिस्पांस बिल्कुल एक जैसा है. एक का रिस्पांस मिलियन माइक्रो सेकंड्स के अंदर है, एक का रिस्पांस सेकंड्स के अंदर है, लेकिन अंडरलाइंग मैथ्स इज एग्जैक्टली सेम. नहीं, नॉन लीनियर नहीं है, डिसीजन बाउंड्री लीनियर है. नहीं, लेट मी करेक्ट यू हियर. So logistic regression is not non-linear. हम वो जो non-linear एक मैपिंग हो रही है, that is only used to reduce the weighted sum which is from minus infinity to infinity to probability. उस probability space के अंदर उसको मैप करने के लिए हम एक non-linear activation फंक्शन यूज करें. बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो डिसीजन बाउंड्री है अभी हमने देखा वो थीटा ट्रांसपोज एक्स है, विच इज लीनियर, ठीक है. इट्स नॉट नॉन लीनियर, ठीक है. जी, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपकी इनपुट x जो है वो 2 डायमेंशनल है, से x1 और x2, ठीक है. आपने यहाँ पे एक मैपिंग की जिसमें instead of 2 features now you have say 5 features.
जिसमें you keep x1, you keep x2, you take x1 square, you take x2 square, and so on and so forth. Right? You can have another say x1 को yeah very nice x1 x2 आपने coupling भी ऐड कर दी इन दोनों, ठीक है. And now you can have, अब जो यहाँ निकलेगी बाउंड्री वो इन 5 फीचर्स के हिसाब से तो लीनियर होगी, राइट, लेकिन उन फीचर्स के हाँ जो आपके 1 2 हैं उस स्पेस के अंदर वो नॉन लीनियर होगी, क्योंकि मैपिंग आपने जो की है 2 to 5, दिस मैपिंग इज नॉन लीनियर. ठीक है. नहीं, सिग्मॉइड का रोल सिर्फ, sigmoid is not introducing, it is introducing non-linearity, but it is not making the decision boundary which is separating the two classes or multiple classes non-linear. The decision boundary remains linear. The role of activation function is to simply squeeze the weighted sum, which is from minus infinity to infinity between 2 0 and 1 through a nonlinear operation, but that is just a mapping, right? That is not going to have any impact on your decision boundary. Decision boundary is defined by theta. आपके जो पैरामीटर्स हैं वो थीटा हैं, और जहाँ पे थीटा आ रहा है दैट सिस्टम अगर उस ब्लॉक को देखें आप, दैट ब्लॉक इज अ लीनियर ब्लॉक. वो सिर्फ इनपुट को लीनियरली मैप कर रहा है एक स्केलर आउटपुट के ऊपर. एनी क्वेश्चंस? ओके. So inherently logical linear. Clear? How can we have a non-linear boundary? Question is, how can we make some change, or how can we modify our input so that we can have a non-linear decision boundary using logistic regression? To have this capability, we first need to understand what is the origin of this linearity. Okay? If you see logistic regression, so you have input, आपने उसका weighted sum लिया, right? So this operation, theta transpose x, this is an origin of linearity, क्योंकि theta transpose x जो है linear mapping है, ठीक है? Weighted sum of linear combination of input है, linear है, okay? And that's why we are getting a linear boundary. To have a non-linear boundary, so what we can do, we can have a non-linear block before this linear transformation. Say this could be from 2 to 5. For example, example, so this you pass your input through a non-linear function before passing through linear and sigmoid. And this non-linear could be exponential mapping, it could be a simple polynomial, or it could be quadratic only. For example, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, ये quadratic है. You keep x1, x2, x1 square, x2 square, and x1, x2. Okay, so all possible second order combinations of second order and less combinations of inputs. Okay. So मैंने 2 to 5 एक मैपिंग कर दी, इसमें मैंने इनपुट 2 फीचर्स दी, आउटपुट 5 फीचर्स है, बट नाउ यहाँ से आगे लीनियर है और अगेन सिग्मॉइड है. Previously I was learning 2 parameters, theta, sorry 3, theta 1, theta 2 and bias. Now I'll be learning 6 parameters. Number of parameters बढ़ गए जो मैं learn करने हैं, right? But now I have the capability कि मेरे पास non-linearity है, right? यहाँ पे you have 5 features, and these 5 features
के लिए मुझे थीटा जो है I need to learn 6 parameters. So in this R6 you still have a linear boundary. In this R6 we still have a linear boundary. क्योंकि देखें यहाँ से आगे तो linear है ना, but when we see this R, the boundary, when we map this boundary which is linear in R6 back in R2, here we get a non-linear boundary. यहाँ पे linear है, यहाँ पे एक non-linear है. Then I think example एक है, if I show you this. Can we say that sigmoid works linear? दोबारा पूछें. Sigmoid की input हमेशा linear ही होनी चाहिए. sigmoid की input scalar है. sigmoid की input तक scalar है बस. And that scalar is a linear combination of inputs. So in this example, I think we have kept x1 square, x2 square, x1, x2, and theta. Yes. Okay. If you see, hang on. Yeah. Okay. So 8 theta of x sigmoid. If I only use classical logistic regression, मुझे इस तरह की होती है कुछ sigma theta 0 सिर्फ पहले 3 components. Okay. If you only keep these 3 terms, we will have a decision boundary which is linear in x1 x2. इस तरह की होती है ना हमारे पास theta 0 plus theta 1 x1 plus theta 2 x2 is equal to 0. Right? So now I have added, मैंने x1 x2 को ट्रांसफॉर्म किया, को मैप किया x1 square x2 square में, and I have also used that these two as features. ठीक है, तो theta 3 theta 4 मैंने ऐड कर दी. Now boundary looks like this. This whole is equal to 0, and this would correspond to this circular boundary. Number of parameters कितने हैं? 4, right? So number of features कितने हैं? If we treat this as a classical logistic regression, एक feature x1, x2 दूसरा feature, x1 square तीसरा feature, x2 square as the fourth feature, right? Now when you learn, okay, if I treat it like this, theta 0 plus theta 1, let me call it modified comment w का था शायद, right? w1 theta 2 w2 theta 3 w3 plus theta 4 w4 is equal to 0. So now this equation, this is linear. So this represents a linear boundary or a linear hyperplane in R4. और जो 4 dimension है वो एक W1 से W2 W3 W4 से, ठीक है? Are you getting this? नहीं, नहीं? दोबारा पूछें. जी जी, अगर हम देखें x1 x2 की स्पेस के अंदर तो हमारे पास नॉन लीनियर आ रही है, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने x1 की जगह x1 को भी यूज किया और x1 स्क्वायर को भी यूज किया और x2 स्क्वायर को भी यूज किया, और मैंने कहा कि x1 स्क्वायर जो w3 है, x2 स्क्वायर जो w4 है. So what was happening? Okay. अगर मैं सिर्फ
x1 और x2 लेता हूँ, right? So a weighted sum right, plus sigmoid and you get output. यहाँ पे लीनियर बाउंड्री जो होगी वो लीनियर होगी, ठीक है, लीनियर इन एग्री, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सम लेने से पहले एक हमने ब्लॉक ऐड किया जिसके हमने इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 फीचर्स नाउ यूजिंग 4 इनपुट्स, राइट? और 4 कौन सी हैं वो, एक x1 है, एक x2 है, एक x1 स्क्वायर है और x2 स्क्वायर है। मैं इनको w1 w2 w3 w4 कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आगे लीनियर है, ठीक है। अगर मैं ये w1 है, w2 w3 w4 in R4 the boundary is still linear, R4 में linear है, R2 में वो नॉन लीनियर बन जाता है, got it? क्लियर हो गया? Okay, great. Any other questions? नहीं, it can be, yeah, it could be, you can have exponentials, you can have map non-linear map, ठीक है जी। लॉस फंक्शन की बात करते हैं हम, क्या हम पैरामीटर लर्न कैसे करते हैं। पैरामीटर लर्न करने के लिए हमें लॉस फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। लॉस, okay, we can define in multiple ways. So summary, we have x input and h theta of x as an given theta, h theta of x as, which is nothing but 1/1 plus exponent minus theta transpose x as an output. If this is greater than 0.5 class 1, if less than 0.5 class 0. Given this model, how do we define loss function? We can use mean square, ठीक है। In classification के अंदर we use cross entropy loss. Let me define what do you mean by cross entropy loss. इसको हम sequentially build करते हैं, cross entropy loss है क्या? So as the name suggests, entropy का idea है कुछ? Change in? अच्छा, entropy quantifies the amount of information content you have. Information theory में we use entropy a lot. Question? Okay. So cross entropy loss कि आपका ट्रू लेबल क्या है और आपका मॉडल आपको क्या बता रहा है, ठीक है। We would like to compare these two, ठीक है, और हम एंट्रोपी का मेजर यूज करते हैं, उन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। So let me build it very sequentially. Okay. So the way we define loss function is, हम कहते हैं कि एक लेबल की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। So we simply take log of the output if the actual label is 1 and log of 1 minus output if the output is 0. Okay, let me explain this up here.
Let's go drop it. हमने कहा कि for a given x and associate label y. For this xy, x belongs to Rd, y is a scalar, जो y सिर्फ 0 1 हो सकता है, binary classification है. तो इस point के लिए we define a loss which is for x of y minus log of probability minus log of probability that gives us the associated label, right? Let's suppose y is equal to अगर 1 है, so you will use minus log of h of theta of x, और अगर y 0 है, फिर minus log of, रेड में लिख लेता हूँ, okay, what is the idea? The idea is अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्लोज टू 1 है तो आप कहीं क्लास 1 है, अगर प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 0 है तो कहीं क्लास 0 है. ठीक है, अगर तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 1 है और असल लेबल भी 1 है तो आप लॉस में बहुत कम कुछ ऐड नहीं करेंगे, लॉस नहीं है, राइट? अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के करीब है और ट्रू लेबल 0 है, loss should be huge, right? Should have a significant term in the loss. Okay, let's talk about the first one. इसको प्लॉट कर सकते हैं. ये फंक्शन ऑफ क्या है? एयर थीटा ऑफ एक्स है ना. okay? अगर मेरे पास एयर थीटा ऑफ एक्स दिया हो, लेट्स सपोज एयर थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से सकती है? बिटवीन 0 and 1. Let's suppose this is h theta of x, right? And you plot minus log of h theta of x. तो कैसा होगा वो? जब थीटा ऑफ x 1 है, log of 1 क्या होता है? log of 1 0, right? अगर h theta of x 0.9 है तब क्या होगा? फर्स्ट लॉग ऑफ 0.9 क्या होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी. बिल्कुल ठीक है. क्योंकि हमारा माइनस लगाया तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, तो एज थीटा ऑफ एक्स गोज फ्रॉम 1 to 0, so this would keep on, so log of 0 minus infinity, right? And चूंकि माइनस लगाया तो प्लस इन्फिनिटी, right? It goes like this. So this is a theta of x 1 है, असल लेबल 1 है तो लॉस नहीं है. ठीक है, what about this? Can you plot this? Minus log of 1 minus theta. जब थीटा 0 है तभी 0 होगा. 1 पे इन्फिनिटी हो जाएगा. Okay, so how can we combine these two? हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं. ठीक है, अब मैंने इस तरह करते हैं, हम कहते हैं कि जब y इज इक्वल टू 1 है तो हम कहते हैं कि log ऑफ h थीटा ऑफ x है, और यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं प्लस सॉरी y, when y is equal to 0 you want other term, right? माइनस मैंने कॉमन ले लिया, log of 1 minus h of theta x. You can easily verify that this is equal to this piecewise function.
क्योंकि जब y 1 होगा you can only get the first term, and y is equal to 0 you only get the second term. Okay? So we can combine these two by simply exploiting y is equal to 1 since y takes the binary values. Okay? So this is loss function for one xy. ठीक है अगर आप मल्टीपल आपके पास xy होंगे तो ये सम ओवर डिफरेंट xy. ठीक है ये समझ आ रही है आपको ये? Are you following this? y एक्चुअल लेवल है, एक्चुअल भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है. तो उसको मल्टीप्लाई करें हमारे को डिफरेंट लॉग करके इलेक्शन हो जाएगा. जी हम तो एक्चुअल लेवल, इस लेवल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है तो ये एक्चुअल लेवल है y, this is the probability that actual level is 1. 0 actual probability that the probability that actual level is 1, actual level is 0. Label given its probability, label given its probability. जी जी जब y1 होगा तो this term would be 0, 0 होगा तो this term would be 0. ठीक है so we can use the property of log और हम इन दोनों को combine भी कर सकते हैं. You know y log of something would be log of something raised over y, right? So हम y को यहाँ ले लेते हैं और 1 minus y को I can move up here. Furthermore, log of a plus b is log of a plus log of b would be equal to log of a times b. दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है सो अगर मैं सिंपली करूँ लॉस ऑफ गिवन एक्स वाई वुड बी इक्वल टू log of h theta of x raised to the power y 1 minus h theta of x raised to the power क्या था 1 minus y. This is the loss function, and if we have multiple points I can add subscript I sorry negative भी आएगा. Thank you. I can add I and in general the loss function would be for a whole dictionary, for a whole data set would be I is equal to 1 2. ठीक है okay how do we compute okay if we're using gradient descent to find these to carry out learning we should know how to compute the gradient of this loss function with respect to theta. Okay so maybe today we will talk about the good thing about sigmoid function. उसका gradient क्या होता है, right? क्योंकि इसका gradient find करने के लिए we need we should know how to compute derivative of the sigmoid, right? क्योंकि वो यहाँ पे यूज होगा. ठीक है right let's talk about sigmoid first. yes, sigmoid जो है उसका डेरिवेटिव क्या होता है. ठीक है सिंपल स्केलर वैलिड फंक्शन राइट. बाय द वे ये होता है वो but we don't compute कि वो sigmoid into z into 1 minus sigma z होता है. but let's do this. ठीक है हम कहते हैं कि we apply
the principal 1 over 1 plus exponent of minus z whole square into minus of exponent of minus. ठीक है, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि exponent of minus z 1 plus exponent of minus z, यहाँ पे कोई माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. और hang on, if you see the first term on left hand side, this is, okay, the second term is simply sigmoid, और the first term है वो in fact 1 minus sigmoid है. So जब भी हम डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे, if you know sigmoid, you say you also know the derivative of sigmoid, क्योंकि आप sigmoid को जो वैल्यू आ रही है उसको 1 माइनस उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो you get derivative. ठीक है, so when we run algorithms we don't need to compute derivative while solving this. So we stop here and next time we'll continue from here. कि हमें sigmoid का loss function हमें loss function पता है और we also know sigmoid derivative. इसको हम derive करेंगे next class के अंदर और फिर हम will talk about multi-class logistic regression. ठीक है, any questions जी? ऑनलाइन बैठे हैं बेटा? सर ये आपने जो निकाला जी है बेटा. डिफरेंशियल, सर आपने जो डिफरेंशियल निकाला है सिग्मॉइड का, तो ये जो b z into 1 minus b z इसका फाइनल आंसर है? I think let me switch to other audio. यहाँ से बताइए. सर ये आपने सिग्मॉइड का डिफरेंशियल जो निकाला है वो क्वोशिएंट रूल से बेसिकली निकाला है. जी मैंने इसे क्वेश्चन रूल निकाला, मैंने सिंपली ये किया है 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस जी के पावर माइनस 1. अच्छा, ओके ओके बहुत आसान, क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकालें. ठीक है, ओके. ठीक है जी, चलो.